Begin with the big political story of the day. Expect fireworks in Uttar Pradesh as the battle for Uttar Pradesh is heating up. It is going to be a huge day really for political parties, particularly because of all of the leaders leaving the BJP. 3 ministers have quit the Yogi cabinet in 3 days. The first to leave was Swami Prasad Maurya, followed by Dara Singh Chauhan and Dharam Singh Saini. Now, it's a big blow for the BJP because they've also lost 6 MLAs. All of these rebels are set to join the Samajwadi party. This exodus comes just a month before UP goes to polls on February 9th. Swami Prasad Maurya, after his resignation, had warned that there will be a final dhamaka on January 14th. All eyes are now on the turncoat. Is he going to make some sort of a big announcement? Are there going to be more leaders following suit? We will know in the coming hours. औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। अभी देखिए, आज तीसरा दिन है, इस्तीफा देने का आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख तक। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही, और साथ साथ इनके साथ भी 13 MLA और कुछ साथी वो इस पर ज्वाइन होने वाले हैं। और आज 9 से शुरुआत है, अब देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा। Swami Prasad Maurya, Dara Singh Chauhan, and the latest addition to this list of exiting mantris from the Yogi Adityanath government is Dharam Singh Saini. The BJP is facing one setback after the another. With less than a month left for Uttar Pradesh polls, BJP MLAs are on a quitting spree. A total of 11 BJP leaders, including top ministers and MLAs, have quit the party so far. All look set to join the opposition Samajwadi party. Among these 11, Swami Prasad Maurya and Dara Singh Chauhan are prominent OBC leaders. Both Maurya and Chauhan left the Saffron party, citing social justice as the reason. जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के, जिस तरीके से पिछड़े समाज के जो स्कॉलरशिप को लेकर के, आज ऐसे जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, आप देख लीजिए रिकॉर्ड है। वो जो पिछड़े समाज के लोग जो बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, आज स्कॉलरशिप से वंचित करने की जो साजिश हो रही है, आज वो पीड़ित हैं। आरक्षण से जो खिलवाड़ करने का काम किया, उसके नाते पीड़ित है। ये तो रिकॉर्ड में है, सारे लोग जानते हैं। Dropping a bombshell on the BJP, Maurya has tweeted that more resignations will take place in the days to come. बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद सभी लोग हमारे ही नेतृत्व में वहां गए थे, और जब यहां में छोड़ा तो फिर सब हमारे नेतृत्व में यहां पर आ रहे हैं। The MIF leaders have accused the BJP of not doing enough for Dalits, backward classes, unemployed youth and the farmers. हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है,
दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन व्यवस्थाओं पर कुठाराघात किया है, ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। The exodus threatens to give the BJP an anti-OBC image, something that the Saffron Party took years to overcome. The BJP stormed to power at centre and in Uttar Pradesh after poaching non-Yadav OBC voters from the Samajwadi Party and non-Jat of Dalit votes from the BSP in the 2014 Lok Sabha polls and 2017 Uttar Pradesh Vidhan Sabha polls. The OBCs make up around 35 to 37% votes in UP. Yadav voters make up about 10 to 12% of these votes and are set to dominate the OBC vote bank. The BJP focused on the rest 25% of OBC votes in elections between 2014 and 2019. Surveys show that the BJP's OBC vote share increased by 12 to 14% between 2009 and 2014 Lok Sabha elections. The committed upper caste voters and the non-Yadav OBC brought back the Bharatiya Janata Party back to power in Uttar Pradesh after 14 long years. But with Samajwadi Party denting its base, especially the non-Yadav OBC vote, will it turn into a thing of worry for BJP and a curve of a smile for SP Chief Akhilesh Yadav? With cameraman Neeraj Kumar, Samarth Srivastava for India Today. Well, if the Congress thought that the war of the Sardars within their party in Punjab is over, it clearly isn't. Navjot Singh Sidhu has reignited the entire issue after what seemed like finally a thaw. Now Sidhu has taken to Twitter to directly dare and take on the Channi government. In an explosive tweet that Sidhu has put out, he's trained guns at Chief Minister Channi, saying either the system will prevail or he will. The Punjab Congress chief invoked sacrilege case and the drug trade to target his own government. Sidhu's reiterated that he's not running for any post, but said that Punjab needed to get rid of mafias who are running the state in connivance with certain mischievous politicians. वो पॉपुलर होंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर पॉपुलर हैं तो प्रमाणित करने की क्या जरूरत है। देखिए वो सूर्य है, वो प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है। जो कुछ भी लोग चाहेंगे वो होगा। जमीन फाड़ के आवाज आएगी। खुद से कहने से, अपने मुंह से शादी मुबारक कहने से कुछ नहीं होगा। लोग अगर कहेंगे, हाईकमांड अगर कहेगी, तो उस बात में वजन है। मैं अभी इलेक्शन मोड में है ही नहीं, मैं सरकार चला रहा हूँ। जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन की बात करेंगे। अभी तो इलेक्शन ही नहीं आए, पानी आएगा तभी मौजे खोलेंगे ना। पानी आया नहीं, बूट पहले खोलकर खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। आने दो पानी, पानी आएगा तो उस तरीके से विचार करेंगे, शांति से करेंगे जैसे मैं करता हूँ। दो राह ने, या तो लॉलीपॉप दे दो, आप फ्री फलाना, आखिरी दो भी नहीं होता। पौने 5 साल ठोका ठोक, इनू टा उनू सेट, एते जुल्म, एदे हक खो, ते आखिरी 2 महीने आ भी ले ला, आ भी ओ समान पट के थोड़े जेब च सट दो, तारे ले आओ, आ भी दे दूं। उन्होंने पूछो कित्थों देगा, सवाल ये है कित्थों देगा। Meanwhile, the Aam Aadmi Party is also trying to ensure that they prove themselves to be a serious contender in the Punjab elections. And what's come as a setback for the AAP is that farmer unions have made it very clear that they're not going to have an alliance with the Aam Aadmi Party. The Sanyukt Samaj Morcha has said there will be no alliance with Kejriwal. And even Kejriwal has gone public to say that this could prove to be a setback, particularly because the floating vote share in Punjab may not now choose the AAP.
The Aam Aadmi Party's Mission Punjab has suffered a setback. Farmers Union Sanyukt Samaj Morcha has ruled out an alliance with Aam Aadmi Party. A move that will definitely dent the chances of Arvind Kejriwal's party in the state. Kejriwal on Wednesday admitted the two could not reach a seat-sharing agreement, while the SSM demanded a lion's share of 60 seats. Aam Aadmi Party agreed to offer only 10 to 15. राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। वहाँ पे बात बनी नहीं। संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। According to sources, the SSM also objected to candidature of some AAP nominees. Political analysts say the SSM's decision to contest elections will divide the floating vote, which Aam Aadmi Party was aiming for. Three cornered मेन कॉन्टेस्ट है, मेन पार्टीज, और एक पार्टी जो है वो स्पॉइलर है, फार्मर्स की जो नई पार्टी बनी है, दैट विल बी ए मेगा स्पॉइलर फॉर जो ये मेजर मेन पार्टीज हैं उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान शायद आम आदमी पार्टी को होगा। The floating vote share in Punjab would be between 15 to 20%. In the previous state elections in 2017, Aam Aadmi Party had won 23.7% votes, while Congress got 38.5% and Akali Dal won 25.2%. मुझे लगता है ये जो 16%, 15 से 20% वोट शेयर है वो हमेशा थर्ड अल्टरनेटिव की तलाश में रहता है, और अच्छी बात है, चेंज चाहता है, और उससे दूसरी पार्टियों पे प्रेशर भी बना रहता है कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और उस वोट बैंक के अब हिस्सेदारी जो है वो आम आदमी पार्टी की भी है, और इसमें हिस्सेदारी अब जो किसान यूनियन बनी है नई, जिन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी भी हिस्सेदारी उसमें होगी। तो उसमें अगर हम इन्फ्लुएंस करें, उसका इन्फ्लुएंस ड्रा करें, तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान शायद आम आदमी पार्टी को होगा। Political analysts say the dent will be bigger in eastern and central Malwa region, which has the highest 69 seats and almost decides who rules the state. The SSM may now form an alliance with Gurnam Chaduni's Sanyukt Sangharsh Party. Together, they can impact the rural votes in all three major regions of Malwa, Majha and Doaba. The Congress, meanwhile, wrote off Aam Aadmi Party's prospects in Punjab. मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई इरादा है नहीं। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी बिखरी पड़ी है और इनको कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता। The Aam Aadmi Party has suffered multiple blows in its fight to win Punjab. Other than their failure to stitch an alliance with farmer unions, Aam Aadmi Party has also been unable to name a CM face. With Manjeet Sehgal, Bureau Report, India Today. Let's also get you the news that came in last evening. 7 people unfortunately have died, several injured after a Guwahati-bound Bikaner train derailed in Bengal. All rescue efforts are on. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav is expected to visit the site today. It was 5:15 p.m. when the Guwahati-bound Bikaner Express with 1,200 passengers went off the track. In seconds, over 12 coaches lay mangled, leaving some dead and several injured. एक्सीडेंट जो है, हम S1 में थे, हमारा डिब्बा तो बच गया है। बाकी अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हल्ला मच गया है, भागा-दौड़ी हो गया है। तो नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा डस्टबिन पर गिरा हुआ था और बाकी हालत खराब था, आदमी मैंने गिरा पड़ा था। Eyewitnesses recall the moments before tragedy struck the express train. S12 में था, उधर अचानक धक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था न्यू जलपाईगुड़ी से बोंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी? कैजुअलिटी को 2-4 डब्बा पूरा
बुरी तरह से जलती हुआ है। दूसरा डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। As news of the accident spread, locals gathered to help in the rescue of trapped passengers. At present, we have arrived in the spot where the accident has taken place. A lot of people are rescued by the district administration and the railway administration. The rescue team has arrived already on the spot, and right now the 5 persons are declared by the authorities that 5 persons are dead. At present, the rescue van already has arrived, and simultaneously this rescue vehicles are there. So, a lot of people are gathering over here, and local people, they are helping like anything else. NDRF teams and police rushed the injured to a hospital in Jallikattu for treatment. देखिए, रेलवे मंत्रालय की तरफ से हमारा पूरा फोकस इस समय रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर है। किस तरह से घायलों की मदद की जाए, सबको नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में भर्ती करवा दिया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है वो सिलीगुड़ी से साइट पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ट्रेन भी वहां पे पहुंच चुकी है इस समय, जो बाकी पैसेंजर्स को निकालने के लिए और लेके जाने के लिए। The railway minister announced 5 lakh ex gratia for those who died and 1 lakh for those grievously injured. मुआवजा अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी जनरल मैनेजर के ऑफिस से। 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फॉर द डिसीज्ड पीपल एंड 1 लाख फॉर द ग्रीवियस इंजरी और 25,000 फॉर सिंपल इंजरी। Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah took stock of the situation and expressed their condolences for the bereaved families. The Congress has demanded accountability for the mishap. Whether this kind of railway accident could have been averted or not. In the age of modern technology, why this kind of derailment took place, that is really questionable. The accident to a major train comes after a long time, but once again raises questions on the safety of tracks. The high-level inquiry ordered into the accident by the railways could well reveal where the fault lay. With Rajan Pradhan in Jallikattu, Bureau Report, India Today. The COVID surge in the national capital continues, with over 29,000 cases being reported in the last 24 hours in Delhi. Now, the highest daily infection since April 20th has now been reported in the national capital, with the COVID positivity rate also mounting. What's more alarming is that a total of 100 COVID deaths have been recorded in the last 5 days. When asked about the surge in fatalities, Delhi Health Minister Satyendra Jain has said that the maximum deaths were of patients who already suffered from serious ailments. So comorbids were the ones who in fact have passed away due to this infection. Pongal festivities have kicked off in Tamil Nadu, which also means the very popular Jallikattu sport has begun. But this time under the shadow of the pandemic. The government is giving the go-ahead for Jallikattu events to be held, but with very strict guidelines in place. With the main Jallikattu event just days away, Pramod Madhav files this report of what the restrictions look like. The Pongal festivities have kicked off in Tamil Nadu with the world-famous Jallikattu sport. Participants gathered in large numbers in Pudukkottai, trying to latch onto the bulls and hold on as long as possible. The bulls reared for this annual sport give it their all, kicking with all their might to stop participants from getting near them. This is a Pongal treat for the people of Tamil Nadu, and the Mattu Pongal festivities will continue for the next few days in different parts of the state. The Omicron crisis, however, has thrown a shadow on the celebrations. Jallikattu is a huge crowd puller, an integral part of Mattu Pongal celebrations in Tamil Nadu. But this year, there are restrictions on the number of people who can attend the event. Considering that in such a rugged sport, it's impossible to mandate masks. The government has said that a COVID vaccination certificate or a negative COVID report is a must to participate and to watch the spectacle. No more than 150 spectators are allowed, and only 50% occupancy is allowed at the venue, which is why in many events the stands, which will be filled with people, now wear a deserted look. और जल्लीकट्टिले
300 வீரர்களுக்கு மேற்படாமல் மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் பார்வையாளர்களாக 150 பேரும் அந்த ஜல்லிக்கட்டிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் உள்ளூர் பொதுமக்களை பொறுத்தளவில் அவர்கள் பார்வையாளர்களாக மட்டும் அதிலே கலந்து கொள்ள முடியும். The main Jallikattu event is held in Alanganallur in Madurai, and organizers had to push the event by a day due to the full-fledged lockdown in the state on Sunday. And that's when the real challenge arises for authorities when the crowds at these mega events will have to be controlled. COVID may have hampered the scale of the celebrations, but it definitely hasn't dampened spirits, and organizers have made it clear that over the next few days, Jallikattu events like this one in Pudukkottai will continue with full festive fervor. Pongal festival has kicked off with massive excitement in the state of Tamil Nadu, and it will be a Herculean task for the state government to enforce the pandemic laws, especially on Mattu Pongal and Kanum Pongal, when thousands throng to various tourist spots. The fear is that festivities amidst a pandemic would lead to a massive surge in COVID cases in the state. With Divyan, Pramod Madhav for India Today.